हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आम ओपीएससी ओडिशा सिविल सर्विस और ओएस एग्जाम रो लाइक कमिंग ईयर एग्जाम प्रिपरेशन पाई लास्ट ईयर रो आम डिस्कशन करूछु। सो 2020-21 प्रीलिम्स रो जीएस पेपर 1 डिस्कशन। सो आम ऑलरेडी 13 टा पार्ट रे लाइक ईच पार्ट रे 5 लेखा क्वेश्चन पर डिटेल एनालिसिस कर सारछु। सो यू कैन सी दोस वीडियोज एज वेल। सो दिस इज द 14th पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ डिस्कशन। तो हमें क्वेश्चन नंबर 66 टू 70 पर्यंत तो यही वीडियो रे डिस्कशन करिवे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So into question number 66. So question is that in which of the following demographic transition stages the intensive subsistence farming is prevalent? तो ये भितर को demographic transition stage रे intensive subsistence farming prevalent हला। तो stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 आंसर is stage 2। so let's मैं देखिबा अबे सब स्टेज कोन कोन जिंस अछि। तो स्टेज 1 जोड़ा हला प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुए। तो प्रथम स्टेज कौन होता है, बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई था। सो हाई इन्फेंट मोर्टालिटी एंड वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं। बर्थ रेट इज आल्सो हाई, डेथ रेट इज आल्सो हाई। तो रूरल सोसाइटीज वेर डिपेंडेंट ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर माने कोन, जहां से प्रोडक्शन करले सेटा खाइ देगी माने सेटा खत्म कर देले। सो एक्सपोर्ट वगैरह पे सेने बेसिकली प्रोडक्शन करनोतले। सो दैट इज कॉल्ड प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। सेकंड स्टेज 2 इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज 2। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हला तो कौन फार्मिंग टेक्निक्स रे इंप्रूवमेंट हला, इंक्रीज इन फूड सप्लाई, द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बाय रूरल सोसाइटीज। तो इंटेंसिव माने कोन बहुत ठीक है एक्स्ट्रा माने सही जगह रे ही ठीक है अधिका परिमाण रो प्रोडक्शन कले। ओके, during the second stage industrial revolution. Stage 3 is the post industrial revolution. Post industrial revolution कौन, the mechanization of farming and increase in production of crops for sale, better irrigation facilities. तो पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन हला कि फार्मिंग मेकानाइजेशन हला एंड प्रोडक्शन हला बहुत ज्यादा। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस जिंस हला, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। सो एंड दिस इज आल्सो एन इंक्रीज इन स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन हला। ड्यूरिंग स्टेज 3 कौन होची ताले स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन इंप्रूवमेंट होची। द गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स नैरोज डाउन। तो जो बर्थ और डेथ रेट जो गैप थिला सेटा धीरे धीरे कम लागो, डेथ रेट विल डिक्रीज। एंड स्टेज 4 इज द स्टेबलाइजेशन स्टेज। इनोवेशन इन एग्रीकल्चर टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बर्थ कंट्रोल इज वाइडली इन एक्सरसाइज जोड़ा कि अबे हम धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन स्टेज को जाउछु। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट आर लो हला। स्टेज 3 कोन हेजिवो तमरो बर्थ रेट लो हेजिवो, डेथ रेट बेसिकली बर्थ रेट हाई थिवो और डेथ रेट धीरे धीरे लो हित लागिवो। सो लाइक दैट। Stage 4-5 is declining population. Birth rates may drop to well below replacement level. Okay, so declining population and birth rates may drop to well below replacement level. Okay, so coming to question number 67. It is 12 noon at Greenwich. Greenwich तो मैं जानती हूँ Greenwich meridian जो कि लंदन रे अछि, that London के through pass करछि imaginary line. So that will be the time at a place situated at 60 degree. What will be the time at a place situated at 60 degree east longitude? हैला। तो आंसर 4 तो 4 केमती भाला, लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग। तो केमिति हम एटा कैलकुलेशन करिवो हैला। या पर आई थिंक इमेज टा या पर अच्छा एठी अछि। ओके, लेट्स लर्न व्हाट इज द थिंग। फर्स्ट ला तमे जानछो अर्थ को तमे लाइक अक्षांश द्राघिमा जो कहंती, दैट इज इंग्लिश ता कोन को लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो जोड़ा तुमरो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जाउ छै बडा हला, इक्वेटर साइड रे को लैटिट्यूड कहौ छी और जोड़ा तुमरो बेसिकली नॉर्थ टू साउथ जाउ छी वो लॉन्गिट्यूड कहौ छी। ओके, तो लॉन्गिट्यूड हिसाब रे बेसिकली अर्थ को एटा तो तुमरो ऊपर 90 तळु 90 तो 180 डिग्री हे छी तुमरो कोन लैटिट्यूड ता। लॉन्गिट्यूड ता लाइक तुमरो एठू जो ग्रीनिच मेरिडियन को 0 बोली कंसीडर करा होची हला, से थ्रू ईस्ट आड़ को 180 एंड वेस्ट आड़ को 180 डिग्री होची। तो टोटल 360 डिग्री सर्कुलर तुमरो अर्थ सर्कुलर तो कोन स्फेरिकल। सो सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो निजो चारि पटे घोरिया पे जोड़ा कि रोटेशन भी कहै छै, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ 360 डिग्री वन डे और 24 आवर्स। तो 24 घंटा से निजो चारि पटे घोरि जाउ छै 360 डिग्री। सो जदि 360 डिवाइड बाय 24 करिवो कोन आसीओ, इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर हैला। तो 1 आवर रे केते 15 डिग्री से पास करछि हैला, निजो चारि पटे घुरुछि। और जदि सेटा को 1 डिग्री रे करिवो तो 1 डिग्री केते मिनिट जाउ छै 4 मिनिट। 1 डिग्री मतलब रोटेशन हो पे 4 मिनिट्स लागु छै।
Okay, so that will be the calculation. So the earth rotates from west to east. Hello, we जानते हैं earth rotate करे कौन west to east rotate करे. So every 15 degree we go eastwards. Local time is advanced by 1 hour. No, जेतले हमें डाउन को जो greenwich meridian हमें गोटे लंडन देई. So because that time London was the UK is the main powerhouse. तो सेठी meeting हेतला 1884 रे. And सेटा को करागला कि greenwich गोटे सिटी अछि लंडन नहीं छोटो जगहटा जहाँ को बेसिकली 0 डिग्री कंसीडर करागला. ओके, तो 0 डिग्री जब तुम ईस्ट वार्ड को 15 डिग्री तो कोन हे जिवो सेटा हला बेसिकली से गेन करिवो नो सॉरी इट लूज करिवो बेसिकली एडवांस बाय 1 आवर हला. एंड कन्वर्सली इफ यू गो वेस्ट और लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर. ओके, व्हाट इज चलिवो. सो वी मे thus conclude that places east of Greenwich see the sun earlier. तो ग्रीनविच जो एपटे अच्छा सपोज यूके रो एपटे के रहला तम इंडिया अछि तो इंडिया रे प्रथम सनराइज हबो देन यूके रो देन एपटे तम यूएस रे परे हबो लाइक दैट. तो बेसिकली जतले हमें ईस्ट टू वेस्ट को जाउछु तो बेसिकली कोन होची बेसिकली हमें टाइम टा गेन करि जाउछु हला कि एंड एपटे जब वेस्ट वेस्ट तो लूज कर जाउछु. एटा हम ग्रीनविच मेरिडियन पक्केरु कहूछ हला. ग्रीनविच तो तमे जदी राइट को जीवो तो टाइम तमर लूज हबो आ लेफ्ट को ले टाइम गेन करिवो. Basically तमे एपटो सनराइज एपटो स्टार्ट है एपटो धीरे धीरे जाउची लाइक दैट. So we may thus conclude that places east of Greenwich see the sun earlier and gain time, whereas places west of Greenwich see the sun later and lose time. Okay, we know that if you know this is called what is the GMT, Greenwich Meridian time. To find local time we merely have to add or subtract a difference in the number of hours from the given longitude. तो तुम यदि लोकेशन रो लॉन्गिट्यूड पटा जणा थिवो हैला आ ग्रीनविच मेरिडियन रो टाइम जणा थिवो तो तुम से हिसाब रे कैलकुलेशन करि परिबो. सो बोथ कनाडा एंड यूएसए हैव 5 टाइम जोन्स बिकॉज़ कनाडा यूएसए बहुत बड़ कंट्री तो समान को बाकरे बहुत टाइम 5 टाइम जोन अछि अटलांटिक ईस्टर्न सेंट्रल माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन्स. द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ द अटलांटिक पैसिफिक इज नियरली 5 आवर्स. तो बेसिकली धरो एनटी एला अछि तमरो नॉर्थ अमेरिका एबे अछि ना लाइक दिस. तो कनाडा एंड यूएसए बहुत बड़ कंट्री उडा तो बेसिकली एपटे फास्ट सनराइज होची एपटे टिल परे हबो. तो जदी तुमे थेबाइन तांगर पांचटा जोन एंटी डिवाइड करा छै 1 2 3 4 5 हैला. सो या भितर डिफरेंस हला 5 आवर्स होची. यूएसएसआर जतल थिला टिल 1991 से टाइम रे तांको बाके 11 टा टाइम जोन थिला. But after disintegration, Russia has now 9 time zones. Russia is the biggest country, largest country, okay, in the world. So अभी ठीक है जानिया इंटरनेशनल डेटलाइन विषय रे. इंटरनेशनल डेटलाइन जेमति ग्रीनविच मेरिडियन ला तमरो अछि कोन 0 डिग्री रे से बळा वन तार सेटु जदी 180 डिग्री ईस्ट आसीबो कि 180 डिग्री वेस्ट आसीबो तो एटा हला आसीबो तमरो कोन इंटरनेशनल डेटलाइन हैला. तो एठी हला कोन एठु जदी तुमे बेसिकली राइट को पळे आसीबो हैला वेस्ट टू ईस्ट गेन से डे बिकॉज़ इट हमें एवडो कंसीडर करछु एटा गोटे हमें गोटे कोन गोटे मीटिंग करके डिसाइड कलु कि हां जतले एठु हला हमें डिसाइड करबा एठु सनराइज जल्दी धीरे धीरे ही एमती गला. ओके, सो बेसिकली जदी तुमे एठी ए जगह रे अछो तुमे जदी एठी तो आज हला 14 तारिख अछि आज 14 तारिख अछि एक्चुअली आज तो हला 25 फेब्रुआरी. ओके, सो 25 फेब्रुआरी एठी तो तुमे आज अछो जे तुमे एठु जस्ट एठी क्रॉस कर जाछो एठी हला तुमरा 24 फेब्रुआरी सेम टाइम हला. आ तुमे एठु जदी एठी पळे आसो गोटे दिन तुमे लूज कर दोछो हिसाब रे देखियो गले. ओके, किंतु ग्रीनविच देखियो तो इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन विषय कथार कहूची ग्रीनविच मेरिडियन हिसाब रे कहूची हला कांसेप्ट बुझे चेष्टा करो. सो बेसिकली दिस इज द आ एटा कहीं जिगजैग हिच हम पढिया बे बुझलो कि. तो एठु हमरो सनराइज टा हिसाब रे हम धीरे धीरे जाउची बिकॉज़ अर्थ हम रोटेट करतो सनराइज भी आंसर पढ पढ चलियो हला वेस्ट टू वेस्ट ईस्ट रोटेट करे ना अर्थ हला कि. तो जंती वेस्ट टू ईस्ट जतले रोटेट कर चलियो धीरे धीरे सनराइज टा पढ पढ चलियो. ओके, एटा दैछि अर्थ रोटेशन एमती वेस्ट टू ईस्ट तो एमती धीरे धीरे एठी धर सन हम फ्रंट रो देखु छे तो कोन एमती बोली बोली चलियो तो सनराइज टा एमती ही चलियो. So similarly in कोन को traveler going eastwards gains time from Greenwich until he reaches the meridian 180 degree east. तो बेसिकली गोटे ट्रैवलर जतले बेसिकली ग्रीनविच मेरिडियन रो कोन होची ईस्ट आडू आसुची he gains time until he reaches the meridian 180 degree east when he will be 12 hours ahead of GMT.
बेसिकली जदि तुम धर ग्रीनविच माने लंडन रे सकाळ 6टा हैछि तो तुम एठी जो एठी पहुंचला केते हेतिबो 180 डिग्री हेले तुम 12 घंटा ऐड कर दियो हंदिया 6टा against time. Similarly in going westwards loses to तो जतले सेपड़ जीव वेस्ट आड़ को एडी फाइनल पहुंचला को तार सेडी कोन हे जीवो गोटे दिन वाले 24 घंटा 12 घंटा पूर्व हे जीवो हला 12 घंटा पूर्व हे जीवो राइट 180 डिग्री. So similarly in going westward he loses 12 hours when he reaches 180 degree west. Thus is the total difference of 24 hours or a whole day between the two sides of 180 degree meridian. This is the international date line where the date changes by exactly 1 day when it is crossed. But एथरे कोन जतले एपड सेपड होची 1 डे हला एपड गले 1 डे प्लस हे होची एपड गले 1 डे माइनस हे होची माने कोन एठी जदी 25 तारिख चलथियो एठी 24 तारिख चलथियो बुझ पछो तो. So a traveler crossing the date line from east to west east to west because of the loss in time he has made हला गोटे दिन से लूज कर देला. A traveler crossing the date line from east to west जदी आछी कोडा east to west इटा east to west ले कोन होची लूजेस डे. And while crossing the deadline from west to east, he gains a day because of the gain in time he encountered. So basically, each जो gain देची time सेटा ला different. He reaches the traveler going westwards gains time. So that is different case रे को होची माने different language कोन कहलियो language same होची but basically सेठी कोन होची gain time माने कोन time टा बढ़ी बढ़ी चलची एपडे किंतु कोन time टा से actually गोटे दिन extra तक मिलची like that. The international date line in the mid-Pacific curves from the normal 180 degree meridian at the Bering Strait. तुम जानते हो Bering Strait तुम्हारा USA and Russia भितर जो आस्ट्रेलिया Bering Strait का होची, right? So he's saying the international date line in the mid-Pacific curves from the normal 180 degree meridian at the Bering Strait, Fiji, Tonga, and other islands to prevent confusion of day and date in some of the island groups that are cut through by a meridian. Suppose ये भितर बहुत island group अच्छे actually अच्छे Melanesia, Polynesia groups. तो सेटा गोटे ग्रुप अछि धर एभले अछि तो जदि तुमे ताकू जिगजैग न करियो से कोन एठिकर आइलैंड उडा अलगा डेट हिजो एठिकर अलगा डेट हिजो सेपे एटा जिगजैग कराइछि हैला. So others to prevent confusion of day and date in some of the island groups that are cut through by the meridian. Some of them keep Asiatic or New Zealand standard time and others follow the American dating time. Okay, so yes, this is the group of islands: Micronesia, Melanesia, and Polynesia. ओके एटा हला तमरो सही बेसिकली रहउची कोन या पाखवा की योर वो जो इंटरनेशनल डेट लाइन तो माइक्रोनेशिया तुम देखु तो एडी मरियाना ट्रेंच मरियाना आइलैंड ग्रुप अछि मार्शल आइलैंड्स किरिबाती जोटा न्यूज था किरिबाती. सो माइक्रोनेशिया देखो इंपोर्टेंट आइलैंड अछि मरियाना आइलैंड ग्रुप्स मार्शल आइलैंड ग्रुप कैरोलिन आइलैंड ग्रुप किरिबाती. मेलानेशिया तुम जाउची इवन न्यू गिनी बिस्मार्क आर्क सोलोमन आइलैंड्स Santa Cruz, Vanuatu, Fiji, New Caledonia. So Melanesia भी बहुत important island उड़ा होची. New Guinea, Solomon Islands, New Caledonia, Fiji. New Caledonia तो हमारा France control होची actually like that. And Polynesia कौन जाउची Hawaii very important थोड़ा की basically US रा part Hawaii Island group. Something Marquess Island to Maui Easter Island the easternmost. Tuvalu, Samoa, Tonga. New Zealand is also coming under Polynesia. Okay, so okay, I'm going to देखिए why is international date line drawn is a zigzag manner? Because the international date line passes through the Pacific Ocean. It is an imaginary line like longitude and latitude. Correct. The time difference on either side of this line is 24 hours. So the date changes as soon as one crosses this line. Some groups of islands like Polynesia, Melanesia, Micronesia fall on either of the date line. So if the date was straight, then two regions of the same island country or island group will fall under different date zones. So thus to avoid any confusion of date, thus this line is drawn through where the sea lies and not land. Hence the international date line is drawn in a zigzag manner. Simple thing. Now let's learn something about Indian Standard Time. So Indian Standard Time, IST that is based on longitude 82.5 degree. Okay, so basically India रा मझा मझी जाउची which passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. So मन रखो which passes through which thing Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. अच्छा मते कमेंट सेक्शन में कहबो कि IST जोटा को स्टेट देखि पास करची हैला ओडिसा देखि पास करची कि नाही आउ अन्य जो केते चारटा की पांचटा को स्टेट देखि पास करची IST माने 82 डिग्री जो 82.5 डिग्री जो अछि लॉन्गिट्यूड
हैला तो सेटा एमती जो जाउची इंडिया तो एमती अछि ना ये बडे अछि तो बेसिकली तो को स्टेट देखि जाउची हैला बडा बडा इमेजिन कर ले एमती भी पारे राइट सो it is 5 hours 30 minutes ahead of greenwich mean time बेसिकली लंडन रे धरो एबे दिन 12 टा हिची तो इंडिया रे केते टाइम हेतिबो एबे तले 12 बारे 5:30 टा एबे हेतिबो लाइक दैट माने ahead 12 pm सेठी हेतले हमरो 5:30 pm 12 am हेतले हमरो 5:30 am like that so now आमे ताको एबे आगो कहला तो greenwich mean time now it is called as the universal coordinated time कहउची सो कीपर ऑफ तो से पे हमर जता लिखा जाए इंडिया रो जो स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी सब लिखा जाए लाइक 5 hours 30 minutes प्लस लाइक जीएमटी और यूटीसी जोड़ा यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कहउची एंड कीपर ऑफ द टाइम इन इंडिया इज हु सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी हैला सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी न्यू दिल्ली इट कीप्स द टाइम which records the time using 5 cesium atomic clocks it keeps the time using what 5 cesium atomic clocks now time zone the key divide gula time zone Scottish born Canadian Sir Sandford Fleming proposed a worldwide system of time zones in 1879 तो 1879 ने propose किया कला Scottish born Canadian Sir Sandford Fleming केबे propose कला 1879 तो तांको propose अनुसार 1884 रे गोटे इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हला that adopted a 24-hour day 1884 1 year before your INC came to in existence Indian National Congress international meridian conference hela countries across the world keep different times because of earth's rotation and revolution around the sun okay history of time zones in India so India used to have two time zones Bombay time and Calcutta time first established in 1884 so British man eta karthile during British Raj Bombay time and Calcutta time it was in 1906 that India had a single IST running through the center of country बाकी 1906 रे कोन कले ताको गोटे सिंगल कर देले इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इन अरुणाचल टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात तो बेसिकली इंडिया धर एमटी अछि तो जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश सेटा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आ एपट जो वेस्टर्न मोस्ट गुजरात वाला होछि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तो जोडे कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री पाखा कि होछि 97 68 टू 97 राइट तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने के 2 घंटा डिफरेंस हो जाउछि हम देखलु ना 15 मिनट 15 डिग्री रे 1 आवर चेंज होउछि हला व्हिच इज मोर देन एनफ टू हैव टू टाइम जोन्स सो नॉर्थ ईस्ट कोन होय लूज बिकॉज़ नॉर्थ ईस्ट प्रथमे हबो एठी प्रथमे कोन हबो सनराइज एपडे हबो लेट रे सनराइज हला सो नॉर्थ ईस्ट लूज इंपोर्टेंट डे लाइट व्हिच कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली एज द सन राइजेस एज अर्ली एज 4 am इन समर एंड ऑफिसेस ओपन एट 10 तो जनरली हमें जो ऑफिस काम जो हुए वर्किंग आवर जनरली 10 am to 4 pm पर्यंत थाए बाकी किंतु सेते जो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे कोन हुए 4टा बेल को संध्या जाय बिकॉज़ सकाळ 4टा रे तांकर सनराइज होची तो सेटा जदी डिफरेंट हम तांकर गोटे अनगा टाइम जोन रहिबो तो सेही अनुसार तांकर वर्किंग आवर एफिशिएंसी बढ़ी पारिबो डे लाइट सेविंग हे पारिबो हला देयर इज समथिंग कॉल्ड circadian rhythm it is the 24-hour cycle that tells our bodies when to sleep rise and eat regulating many physiological processes basically जो atmospheric temperature pressure हला cold sunlight सेटा बहुत हम बॉडी को अफेक्ट करे से अनुसार हमरा जो बायोलॉजिकल साइकिल चले तब कहउछंती circadian rhythm हला circadian rhythm internal body clock is affected by environmental cues something cues like sunlight temperature determines whether one feels like रात रे हमको निद लागे दिन रे भी लागे खाइ साला पर ऑब्वियसली लागे बट मेनली that is good for the time follow करिया ठीक रात रे सुबह दिन रे एनर्जी काम करि परिबो so Jeffrey C Hall Michael W Young Hall Rosbask Young they studied the molecular mechanisms controlling the circadian rhythm they awarded the 2017 Nobel Prize in the category of physiology or medicine तो जो हॉल रॉसबास एंड यंग को बेसिकली सर्काडियन रिदम को स्टडी करिया पई 2017 रे नोबेल प्राइज भी मिलछि मेडिसिन और फिजियोलॉजी रे now coming to question number 68 what is the significance of Dakshin Gangotri okay so answer is C it is a scientific base station in Antarctica okay scientific base station in Antarctica related already आ गोटे क्वेश्चन थिला जो पचारला तमर लेक प्रियदर्शिनी तो अगेन एटा द सेकंड क्वेश्चन पचार दिछि दक्षिण गंगोत्री रे ही सेटा अछि it is a research station near South Gangotri glacier over गलत है it is a research station south of river Ganga Rishikesh गलत scientific base station South Pole गलत
साउथ पोल रे नाही एक्चुअली हला अंटार्कटिका रे अछि सो दिस इज रॉन्ग दैट्स व्हाई सो द Indian Antarctic program is a multidisciplinary multi-institutional program under the control of National Center for Polar and Ocean Research जोटा कि गोवा रे 1998 रे एस्टैब्लिश थिला अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस हला इंडिया ऑफिशियली एक्सेलेड टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम इन अगस्त 1983 तो एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम जो थिला सेथे इंडिया केतले पसिला 1983 रे सो बट सेटा स्टार्ट के होइतला 1961 रे सो इंडिया ऑफिशियली एक्सेलेड टू एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम इन 1983 which was founded in 1961 headquarter hela Buenos Aires Argentina capital hela Buenos Aires currently it has 53 parties Dakshin Gangotri was actually first Indian scientific research based station established in Antarctica as a part of the Indian Antarctic system so Dakshin Gangotri was the first Indian research scientific research based station established in Antarctica it has seta ebe kintu seta use honi khali use hoji supply base bhaliya seta ebe सेते रिसर्च होने that was obsolete now तो दक्षिण गंगोत्री ला फर्स्ट रिसर्च स्टेशन थिला इंडिया रो सेकंड वाज Maitri research station the second one is the second permanent research in Antarctica it was built and finished in 1989 hello it is situated on the rocky mountainous region that are कहउछंती Skirmasher Oasis and India also built a freshwater lake around Maitri around it not in Dakshin Gangotri sorry for the mistake तो मैत्री पाखरे ही लेक प्रियदर्शिनी अछि जोटा कि ऑलरेडी सेम एग्जाम में क्वेश्चन पचतला हम डिस्कस कर सारछु भारती इज द लाटेस्ट थर्ड रिसर्च बेस बट करंटली ऑपरेशन खाली मैत्री अछि एंड भारती तो सिंस 2012 रु एटा ऑपरेशन अछि इट हैज कंस्ट्रक्टेड ऑन टू हेल्प रिसर्चर्स वर्क इन ए सेफ्टी डिस्पाइट द हार्श वेदर एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट कम्यूटेड रिसर्च फैसिलिटी लोकेटेड अराउंड 3000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मैत्री तो फर्स्ट देखिए दक्षिण गंगोत्री देन मैत्री देन भारती and there is something called Sagar Nidhi it is actually 2008 रे कोन हला इंडिया कमिशन द सागर निधि फॉर रिसर्च एटा गोटे वेसल एक्चुअली लाइक नावल वेसल कोइ परियो an ice class vessel it can cut through the thin ice of 40 centimeter depth and is the first Indian vessel to navigate to Antarctic waters and there is a research station of India in North Pole also not exactly North Pole but say polar region North polar region India launched its first scientific expedition to the Arctic Ocean in 2007 and opened a research base named Himadri at the Svalbard, Norway. So Norway ro Svalbard region re seven established kole in July 2008 for carrying out what studies in disciplines like glaciology, atmospheric science वगैरह वगैरह. तो मैत्री भारती सागर निधि तमर जो हला तमर वेसल टा ना हिमाद्री हला नॉर्थ रे आ पूर्व रे हम देखलु एठी दक्षिण गंगोत्री. Coming to question number 69 in India El Nino is very often associated with what? तो एल निनो जोगु कोन हुए भलो मानसून गुड हुए बैड हुए हला एटी कोची बैड मानसून वेदर विथ लो रेन एंड क्रॉप फेलियर एटी दिस नो रेन तो होबनी मानसून हुए बट लो रेन हुए बेसिकली सो आंसर इज बी सो लेट्स लर्न समथिंग अबाउट ला नीना और एल निनो एंड ला नीना ओके देयर इज समथिंग कॉल्ड वाकर सर्कुलेशन बेसिकली वाकर साइकिल हुए जोडा कि नॉर्मल जतले मानसून हुए सेतबेले सेटा हुए नॉर्मल फेनोमेना सो वाकर सर्कुलेशन occurs during normal years Walker circulation of Walker cell is caused by the pressure gradient force that results from a high pressure system over the Eastern Pacific Ocean and a low pressure system over Indonesia. Okay. So in an El Nino year कौन ही जाए basically कुछ ही normal जो Walker cycle हुए Eastern Pacific Ocean में high pressure system था and low pressure system था Indonesia में and El Nino year air pressure drops over large areas of the Central Pacific and along the coast of South America. है तो एल निनो कौन है जाए बेसिकली कौन हुए कि एयर प्रेशर ड्रॉप है जाए सेंट्रल पैसिफिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक एरिया रे तो नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय अ वीक हाई so normal low pressure system is replaced by weak high in the Western Pacific so generally basically कौन हुए Western Pacific हवा कथा लो प्रेशर हला टेम्परेचर अधिक थाए तो कौन हुए सेपटो एपट को सेपट लो प्रेशर होबो तो कौन होबो राइट आडू माने ईस्टर्न पैसिफिक रु वेस्टर्न आड को वाटर आसिया कथा बट जनरली एल निनो वेरे कौन हुए डिफरेंट हो जाए एपटे हला हाई प्रेशर हो जाए लेफ्ट आड को और राइट आड को कौन हो जाए माने ईस्टर्न आड को हाई लो प्रेशर हो जाए तो कौन होबो तो एटा हला रिवर्स हेगला हला सेटा को साउदर्न ऑसिलेशन भी कहा होची दिस चेंज इन प्रेशर सिस्टम causes the trade winds to be reduced basically weak Walker cell हला ट्रेड विंड तो जानथियो ईस्ट टू वेस्ट आसे बट जो एल निनो एरिया कोन है वीक हे जाए बेले रिवर्स भी हे जाए एंड समटाइम्स Walker cell might even get reversed हला तो बेसिकली एल निनो हला तमर जोटा कि वाटर रे होची टेम्परेचर वाटर रे टेम्परेचर डिफरेंस जो कि
जो सर्कुलेशन होची हला आउ बेसिकली साउदर्न ऑस्लेशन इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर इन एयर हला तो सेटा को साउदर्न ऑस्लेशन कहउची आ दुटा को जतले दुटा को फेनोमेना बेसिकली इंटरलिंक्ड थांदी तेनु एनसो ता कहउची एल निनो साउदर्न ऑस्लेशन दिस reduction allows the equatorial counter current along doldrums हला जे तुमे आमे जो पढितले इवन डिस्कस करथिलु कोन ओसेनिक करंट्स रे जानथिलु इक्वेटर रे कोन हुए गोटे करंट आसे हला नॉर्थ इक्वेटर करंट जोडा कि राइट रो आसे लेफ्ट साइड को तो ताकू काउंटर करिया पे नॉर्थ इक्वेटर करंट और साउथ इक्वेटर करंट को तो गोटे इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी जाए तो इट्स सेइंग दैट द रिडक्शन अलाउज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट टू अकोमोडेट वार्म ओशन वाटर अलोंग द कोस्टलाइंस ऑफ पेरू तो एगुडा जतले ट्रेड विंड वगैरह वीक हे जाए तो ए जो हमरो थिला करंट उडा नॉर्थ इक्वेटर एंड साउथ इक्वेटर करंट सेटा वीक हे जाए बाकी जो काउंटर करंट थिला सेटा स्ट्रांग था तो से कोन करे वार्म वाटर को ने कोन करे to accumulate warm ocean water along the coastlines of Peru मतलब जैसे कि जो ऊपर वाटर रोड जनरल वार्म था तो सेटा ठीक नहीं आसे so this accumulation of warm water causes the thermocline to drop in the eastern part of Pacific Ocean which cuts off the upwelling of cold deep ocean water along the coast of Peru तो जतले एपटे तमरा कोन हे जाए ईस्ट कोस्ट को जोनी बेसिकली ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन जोटा कि पेरुवियन कोस्ट भी कहउची सेठी जतले कोन जो बहुत सारा आसी जीव कोन वार्म वाटर आ जो अपवेलिंग सेठी हबनी प्रॉपर ओके तो से पई कोन हो फिशिंग भी सेठी भलो हे पारे नै किंतु ला निना जतले या ऑपोजिट एल निनो ऑफ ऑपोजिट फेनोमेनन कहजे ला निना सेतले बहुत भलो अपवेलिंग हुए एंड भलो फिशिंग हुए so climatically the development of El Nino brings drought to the western Pacific so El Nino जो कोन हे जीवो western Pacific रे drought हे जाए and rains to the equatorial coast of South America and convective storms hurricanes to the central Pacific तो बेसिकली जतले एल निनो हबो सेतरे कोन हबो इंडिया वगैरह भलो वर्षा हबनी ड्रॉट लाइक सिचुएशन हे जीवो हैला वीकेनिंग ऑफ योर मानसून ओके मानसून इंडियन मानसून बहुत प्रकार जिंस पर डिपेंड करे से भीतर एल निनो इज आल्सो इंपोर्टेंट थिंग ओके बट से टाइम रे कोन हे जीवो एपटे जो तमरो योर पेरुवियन वगैरह कोस्ट वगैरह साउथ अमेरिका रे बेसिकली भलो वर्षा हबो ओके बट फिशिंग भलो हबनी नाउ इफेक्ट्स ऑफ एल निनो the warmer waters had a devastating effect तो warm water जो थिला जोटा कि तमरो बेसिकली वेस्ट पैसिफिक रो ईस्ट पैसिफिक आसीबो so devastating effect on marine life existing of the coast of Peru इक्वेटर रे कोन हिजो फिशिंग एक्टिविटी भलो हे पारिबो नै fish catches of the coast of South America were lower than the normal year because there is no upwelling severe droughts occur in Australia Indonesia India and South Africa आ एपडे तम सेपडे साउथ अमेरिका रे वर्षा हो किंतु इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया पड़े बिकॉज एल निनो जो हवा रेडी भलो वर्षा हबा नै ड्रॉट लाइक कंडीशन हेवी रेन्स इन कैलिफोर्निया इक्वेडर एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको तो नॉर्मल कंडीशन में कोन हुए ईस्टर्न पैसिफिक जोटा कि पेरुवियन कोस्ट वगैरह रे कोस्ट ऑफ पेरुवियन इक्वेडर सेथरे कोन हबो तमरो बेसिकली सेपडे ठंडा अधिका थिबो माने गरम कम तो कोन हबो ईस्ट पैसिफिक रो वेस्ट पैसिफिक को वाटर आसीबो हला तो कोन हो जतले इठी वाटर टा पळे आसीबो तो अपवेलिंग हो माने तळु आडू आसीबो तमरो कोल्ड वाटर टा आसीबो ताको रिप्लेस करिया पय तो अपवेलिंग जतले होय कोन बहुत सारा जो मिनरल फ्लो ऊपर पळे आसंती सो फिशिंग भी भलो हुए सो कोल्ड ओशन वाटर एंड गुड फॉर फिशिंग वेस्टर्न पैसिफिक इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वार्म ओशन वाटर एंड प्लेंटी ऑफ रेन्स लो प्रेशर जोन वार्म ओशन वाटर एंड प्लेंटी ऑफ रेन्स नॉर्मल मानसून इन इंडिया दिस इज नॉर्मल कंडीशन एल निनो कोन होची ईस्टर्न पैसिफिक जो थिला सेठी कोन हो जाची वार्म ओशन वाटर आ जाउची सो अपवेलिंग प्रॉपर हे पाने तो बैड फॉर फिशिंग आ वेस्टर्न पैसिफिक रे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया cold ocean water drought like condition bad monsoon in India La Nina रे कोन होची ईस्टर्न पैसिफिक that is actually normal condition टिके extreme condition माने बेसिकली कोन हिजो coast and Peru equator ईस्टर्न पैसिफिक रे very cold ocean water तो very good for fishing माने बहुत भलो upwelling हबो and western pacific very warm ocean water तो heavy और plenty of rains severe monsoon in India La Nina रे बहुत heavy monsoon हबो माने flood वगैरह situation and El Nino रे कोन drought like situation आंसर टा मु तुमको ऑलरेडी कहि दिछि जोडा कि तमर बेसिकली सेम थिंग इट इज रिटन फॉर्मेशन ऑफ एल निनो दैट इज सर्कुलेशन ऑफ वाटर हला जतले टेंपरेचर डिफरेंस होची वाटर रो वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर जो सर्कुलेशन होची सेटा कहउची एल निनो इट इज लिंक्ड विथ पैसिफिक ओशन सर्कुलेशन पैटर्न नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन हला सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस जो ऑसिलेशन होची ताको सदर्न ऑसिलेशन कहउची एंड टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ वाटर ता जो सर्कुलेशन ताको एल निनो कहउची हला तो जेडा मिसे दोते वो आंसर कहउची सदर्न ऑसिलेशन इन ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी is a coherent interannual fluctuation of atmospheric pressure
over the tropical Indo-Pacific region. El Nino and southern oscillation coincide most of the times, hence their combination is called ENSO, that is El Nino southern oscillation. So generally El Nino and southern oscillation coincide करे से पे ताकू ENSO को हाउचे. तो only El Nino होतुबो warm water in Eastern Pacific, right? तो सेठी Eastern Pacific रे proper fishing वगैरह होबनी आ सेठी वर्षा होबो किंतु एपटे drought like situation and cold water in Western Pacific. Only SO जतले low pressure over Eastern Pacific. एटा air pressure को ताकू हाउचे. तो ईस्टर्न पैसिफिक रे लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक आज एटा कहले जदी एनसो हे होची वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक एंड कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक हाई प्रेशर इन वेस्टर्न ओके मिसी गले हाउरी एक्सट्रीम हे होची इवेंट गुडाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडियन ओशन डायपोल आल्सो सो जतले सबले एल निनो हेले दामन हे जे कि इंडिया रे आसी जीवो कोन ड्रॉट बाकी बिकॉज़ जेमति कहली इंडियन मॉनसून बहुत प्रकार दिन सब डिपेंड करे सपोज जदी एल निनो होची बट पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होची तो सतले ता इफेक्ट कमी जीवो सो द इंडियन ओशन डायपोल इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेंपरेचर बिटवीन टू एरियाज और पोल्स हेंस डायपोल जेमति कि हमें देखिलु पैसिफिक ओशन रे गोटे वेस्टर्न पोल रहउची ईस्टर्न पोल रहउची आ से भीतर सर्कुलेशन होउची सेम इंडियन ओशन रे से बडा गोटे अरेबियन सी योर बे ऑफ बंगाल सॉरी अरेबियन सी वेस्ट रहउची बे ऑफ बंगाल और कोइ पारो ईस्टर्न वाला जो इंडियन ओशन ता भीतर गोटे सर्कुलेशन होउची जोडा कि इंडियन ओशन डायपोल कहउची सो वेस्टर्न पोल इन अरेबियन सी and eastern pole in the eastern Indian Ocean, south of Indonesia, with a positive Indian Ocean dipole. Winds over Indian Ocean blow from east to west. Hello, तो positive वाले माने जो normal था इसे बोलिया. So from Bay of Bengal towards Arabian Sea आसी वो तुम्हारा warm water तो एपड़े low pressure zone रहेगा तो भलो monsoon होगा. This results in the Arabian Sea, Western Indian Ocean near Africa being much warmer, and Eastern Indian Ocean around Indonesia become colder and dry. In the negative dipole year, that is negative IOD, reverse happens, and Indonesia much warmer. Next comes to the last question of this video. In the atmosphere, which of the following carries the ozone layer? Ozone layer को जगह अच्छी. तो हम जानते हैं mainly stratosphere होचे, troposphere भी किसी अच्छी. है ना? So troposphere अल्प amount होचे, mainly तो हमारे stratosphere होचे. Answer is stratosphere. So ozone layer occurs in two layers in the atmosphere. The layer closest to the Earth's surface is called troposphere. Hence, ground level or bed ozone is an air pollutant. So basically, troposphere जो ozone होची, सेटा है लाउटे like greenhouse gas वाले काम करची, so that is air pollutant और bed ozone तक पहुंची, that is harmful to breathe and damages crops, trees वगैरह वगैरह, and is a main ingredient of urban smog as well. Okay, तो यहाँ जो troposphere तुम्हारा basically 8 किलोमीटर रहूची कोना pole region रे and equator रे रहूची तुम्हारा equator region रे 18 किलोमीटर. So yeah, so the troposphere generally extends to level about 6 miles up, where it meets the second layer, stratosphere. The stratosphere good ozone layer extends upward from about 6 to 30 miles. So 6 माने अल्प किछि रहउछि तमरो troposphere and stratosphere रहउछि. So it protects the life on earth and from the sun's harmful UV rays. तो mainly यार काम कोन sun रो जो harmful UV rays को absorb करनवा and earth को न पहुंचा देवा. Okay, so there is some concerns with stratosphere ozone layer जोडा कि good ozone को होउछि हैला. So ozone is produced naturally in the stratosphere, but this good ozone is gradually being destroyed. How? By man-made chemicals, that is ozone depleting substances ODS. कौन example तारो chlorofluorocarbon, hydrochlorofluorocarbon, halogens, methyl bromide, carbon tetrachloride, methyl chloroform. So these substances were formerly used and sometimes still are used in coolants, foaming agents, fire extinguishers, solvents, pesticides and aerosol propellants. तो mainly coolant, foaming agent ये सब रे यूज होतला. तो धीरे धीरे गोटे कोन ताको ओडीएस जो थिला ए ओडीएस रा जो कोन हला ओजोन लेयर डिप्रेशन होबा लागला. सो मेनली पोलर रीजन रे सेटिरे डिप्रेशन अधिका होतला. बट तापरे गोटे प्रोटोकॉल कलु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हला. सो ताको चेक करिया पय ओवर 180 कंट्रीज रिकॉग्नाइज द थ्रेट्स posed by ozone depletion, and in 1987 adopted a treaty called Montreal Protocol. The come to phase out the production and use of ozone depleting substances. तो हमें CFC इनिशियल यूज कलो, CFC बदल तापर हम HCFC आनलो. तो FCFC भी से अनुसार बेसिकली वैसे काम कोलानी, तेनु हम तापर आनलो HFC. So Montreal Protocol deals with the development of replacement of substances. प्रथमे हम CFC को रिप्लेस कलो HCFC द्वारा हैला, but that is not very effective. Then हम HFC भी द्वारा रिप्लेस कलो. Although HFC is not a ODS, so hydrofluorocarbon is not a ozone depleting substance, but that is a harmful greenhouse gas. While HFC have only a minor effect on stratospheric ozone, some HFCs are very powerful greenhouse gases. So HFC was not included under the Montreal Protocol. तो सेबे हमें 2016 रे गोटे किगाली अमेंडमेंट कलो टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
that will phase down the production and consumption of some HFCs. So HFC, although is a greenhouse gas, that is included under the Montreal Protocol by the 2016 Kigali Amendment. HFC को reduction करने पे गोटे अलगा protocol अछि, that is your Kyoto Protocol, है ना? Okay, tell me something about Kyoto Protocol in the comment section. Kyoto Protocol कौन पे है ची, सेtre को greenhouse gas include अछि. Okay, so this is it in this video. Okay, so please give your valuable feedback in the comment section, and we have a Telegram channel as well. You can join that group, and whatever your queries, you can also ask in that Telegram channel. Okay, in the same group name only. And our 5टा part रहिला, right? 5टा नहीं, 6टा, right? 14टा में सालू ना. Yeah. So this is the Telegram channel. OPSC exam revise with me. 159 members are there currently. You can join this group as well. Okay, so thank you so much. Hare Krishna, Jai Jagannath.